The second application of potentiometer, that is the comparison of EMF of two primary cell. That is a practical application which you have to perform in the laboratory also. We have to compare two primary cell E1 and E2 by using a potentiometer. Circuit is same as the previous application in which we find out the unknown EMF. Again, battery, key and rheostat, they are connected in series with the potentiometer wire AB. They are in series, and in the that is primary circuit, we call that circuit primary circuit, and in the secondary circuit, positive terminal of cell primary cell E1 and E2, positive terminal of both cell, they are connected with the terminal A, and the negative terminals are connected with the two-way key, galvanometer and jockey as shown in the diagram, which form the secondary circuit. This is the secondary circuit. So, we can form a secondary circuit by that. So, in the first point, सबसे पहले तो आपको diagram form करना है. You have to draw that diagram, and after that you have to be mentioned in the points. First point, battery capital E, key K and rheostat RH are connected in series with potentiometer wire AB. Battery E, key K, rheostat RH are connected in series with potentiometer wire AB to complete primary circuit. To complete primary circuit. Next point, positive terminal of primary cell, positive terminal of primary cell E1 and E2, positive terminal of primary cell E1 and E2 are connected with A point of potentiometer, A point of potentiometer, and the negative terminals are connected to a two-way key, jockey, galvanometer and jockey. Negative terminal of cell are connected with two-way key, galvanometer and jockey to complete the secondary circuit. So, we can perform the primary circuit as well as we can perform the secondary circuit. That is the practical behavior, and you can connect the primary and secondary circuit. वैसे तो प्रैक्टिकल में आजकल आपको कनेक्ट करना होता नहीं है, वहाँ सब कुछ कनेक्टेड मिलता है, लेकिन फिर भी आप इसको कनेक्ट करना आपको आना चाहिए. Yes, next we have to compare the E1 and E2. So, first of all we will connect the K1 key, and we will put the E1 in the circuit, and then we will put the key K2, and we will find out the balancing length for the cell E2 as we have already discussed in the first application. So, write down the third point. When key K1 is closed, and K2 is open, so we have to find out the balancing length for the first primary cell E1. So, we can write that when key K1 is closed and K2 is open, and balancing length for cell E1, is small l1. Balancing length for cell E1 is L1. आपको पता है अगर बैलेंसिंग लेंथ L1 हुआ तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V is directly proportional to the length.
So you can write that it is E1 equal is proportional to balancing length is L1. So you can write that E1 is proportional to L1 and we can put it equation number first. And you can also write that E1 equals to what? XL1. You can give the equation number first to that. E1 equals to XL1. And in this equation you can write that x will be equals to E1 by L1. What is that x? X we call this is potential gradient. Here x is potential gradient. So this is potential gradient. Potential gradient. And when we determine the value of potential gradient, it is known as a standardization of a potentiometer. So you can write after that determination of potential gradient, determination of potential gradient is known as determination of potential gradient is known as standardization of a potentiometer. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. प्रीवियस जो एप्लीकेशन थी उनमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कम होगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी वो पोटेंशियोमीटर हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा होगा, मिनिमम होगा. फाइन. सो ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप एक बार जब भी पोटेंशियोमीटर को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे उसका स्टैंडर्ड पता करेंगे, उसके बाद ही हम बात करते हैं. तो सबसे पहला काम हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाइंड आउट कर लिया. नाउ नेक्स्ट वन. नाउ वी कैन ओपन द की K1 एंड वी क्लोज द की K2. सो वी कैन राइट दैट व्हेन की K1 इज ओपन नाउ is open and key K2 is closed. Now we close the K2 key. Now the second cell is in the main circuit and we can find out the balancing length for this potential difference. Means जो भी इसका potential difference है उस potential difference को आप क्या करते हैं, length of potentiometer पर balance करेंगे. इसका potential difference जिस भी length पर बैलेंस होगा, यानी जितनी लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, गैल्वेनोमीटर विल शो द जीरो डिफ्लेक्शन. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर. सो वी विल गेट द बैलेंसिंग लेंथ L2 हियर. सो व्हेन की K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड and balancing length for cell E2, balancing length for cell E2 is L2. Balancing length for cell E2 is L2. Then you can write that E2 equals to XL2. This is equation number second. So E2 will be equals to XL2. Fine. Now to compare them, in the next point you just divide the equation first by equation second. So do that. Equation first divided by the equation second. So it will be equals to E1 by E2, that is equals to XL1 divided by XL2. If you cancel the x with the x, then the value of E1 by E2, it will be L1 by L2. So final result is E1 by E2 is L1 by L2. That is the comparison of EMF of two cell. That is the comparison of EMF of two cell. इसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या करेंगे, जो आपने पहले रियोस्टेट यूज़ किया, सबसे पहले K1 को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे. K1 को क्लोज करके इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आ गया, जो भी जितने भी सेंटीमीटर आया. देन K2 को ओपन करेंगे, K1 को ओपन कर K2 को क्लोज करेंगे और E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे और L1 L2 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे. दैट इज़ द फर्स्ट रीडिंग. फॉर सेकेंड रीडिंग यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियोमीटर. थोड़ा सा उसका जो स्लाइडर है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, बहुत स्लाइटली.
बहुत स्लाइटली आप उसमें चेंज करें, थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए, और वो जो चेंजेस आएगा L1 और L2 का, उसके बिहाफ पर आप सेकेंड रीडिंग आपके लिए L1 और L2 की आप फाइंड आउट करेंगे और दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अगेन वही CBSE वालों को 5 रीडिंग्स और RBSE वालों को 6 रीडिंग्स लेनी है, और ये जो वैल्यूज़ आएंगी इनको आप क्या करेंगे, कंपेयर करने मतलब इनका जो है एक एवरेज फाइंड आउट कर लें L1 और L2 का। हमें पता है कि जो सेल अगर हमने यूज़ किया है, यहाँ जो 2 सेल यूज़ किए जाते हैं उनमें से जो पहला सेल है वो अगर लेक्लांसी है तो लेक्लांसी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.5, और जो दूसरा डेनियल यूज़ किया जाता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.08। 1.5 डिवाइड बाय 1.08, इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है कि L1 का वैल्यू L2 से कैसा आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। L1 का वैल्यू L2 से कैसा होगा, ग्रेटर होगा इस वाले केस में, याद रखिएगा। अगर लेक्लांसी को फर्स्ट सेल लिया है और डेनियल को हमने क्या लिया है, सेकंड लिया है। अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, डेनियल आपने E1 की फॉर्म में ले लिया है और लेक्लांसी आपने E2 की फॉर्म में लिया है, तो जो वैल्यू आएगा लेस देन 1 होगा। फिर L1 का वैल्यू जो है L2 से कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। बहुत इजी सा प्रैक्टिकल है, बस सेटअप तो वैसे भी आजकल कंप्लीट मिलता है। आपको सिर्फ K1 और K2 को एक को ओपन करना है, एक को क्लोज करना है, और उनके लिए बैलेंसिंग लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। बैलेंसिंग लेंथ निकालने के लिए हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें आपने देखा था कि हमें अगर फर्स्ट वायर अगर आप यूज़ कर रहे हो, इफ़ दैट वायर इज स्टार्टिंग फ्रॉम left to right, then we'll use the scale starting 0 from left, and if the wire is coming from the right and the current is flowing from right to left, then we will use the scale whose 0 starting from right. So we can measure the value of L1 and L2. So that is the second application of potentiometer, that was comparison of EMF of 2 cell. And the third, which is also a good application, और उस पर भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल बेस्ड आपकी एप्लीकेशन है, दैट इज वी हैव टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसका वैल्यू हम फाइंड आउट करें उससे पहले हम ये समझें कि व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, क्या होगा, उसके बिहाफ पर फिर हम पोटेंशियोमीटर के से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड एप्लीकेशन मेंशन करने से पहले एक नोट लगा लें, और नोट में ही हम मेंशन कर लेंगे क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो यू कैन राइट डाउन दैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल of a cell. This is for the primary cell. This is for the primary cell. एक प्राइमरी सेल के अंदर अगर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इन प्राइमरी इन अ सेल वी यूज अ लिक्विड which is known as electrolyte. Okay, and you also know that electrolyte is the liquid which allow to pass electricity as well as it decompose into its respective ion. Okay, it allowed to pass electricity and decompose into its respective ion, but when we flow the current through that electrolyte of cell, then it will oppose the flow of charges, and that opposition is created inside the cell. That's why we call it internal resistance of cell. So we can define internal resistance of cell, that is the resistance provided by the electrolyte of cell is known as internal resistance of cell. So you can write down that internal resistance of cell, that is resistance provided by electrolyte of a cell is known as internal resistance of cell. We can find out a relation for that. Suppose we have a cell and internal resistance we shown in this way, and we connect external resistance across the resistance. This is the EMF of cell E,
and internal resistance is small r, and external resistance is denoted by capital R, and the current flowing in the circuit is suppose capital I, and we know that potential difference across the cell, if it is in working condition, is known as टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स जब आप सेल को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके लिए क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स द वोल्टेज अक्रॉस दैट रजिस्टर इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V, एंड V विल बी इक्वल्स टू IR। तो हम V की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे कैसे, लेकिन उससे पहले अगर आपसे कहा जाए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R प्लस R, बिकॉज दीज आर इन सीरीज, and EMF is used is E, so you can find out the electric current, that is E by total resistance. So you can write that resistance of circuit is R plus R, because these are in series. So electric current, you know the value of electric current is total EMF divided by the total resistance. So the I will be equals to, the value of I is E by R plus small r. Fine. So terminal potential difference. So terminal potential difference. If you want to find out the terminal potential difference, then V will be equals to IR. And the value of I is E by R plus small r, and the value multiplied with the capital R. Now we cross multiplied this relation and we can get the value of internal resistance small r. So to get that, just cross multiply the term. This is VR plus V into small r equals to E into capital R. So the VR equals to, this is E minus V into R. इसको इधर ले जाएंगे, so that will be negative value. So the small r will be equals to E minus V upon V into R. That is the internal resistance of cell. So internal resistance of cell is E minus V by V into capital R. So that relation we will use to find out practically the internal resistance of primary cell. तो ये तो हमने एक जनरल वे में इसको वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन था, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ internal resistance of primary cell by using potentiometer. So you can write the third application. Determination of internal resistance of primary cell. Determination of internal resistance of a primary cell. By using the potentiometer we have to find the internal resistance. तो internal resistance के लिए सबसे पहले primary circuit, again battery, E, key K, this is the key K, and this is the rheostat RH. So the same language we can use. Battery E, key K and rheostat RH are connected in series with the potentiometer wire AB to complete the primary circuit. The circuit is known as primary circuit. Fine. Now in the second circuit, yani secondary circuit, we use that cell for which we have to find out the internal resistance. So this is the cell, you can take it E1 here, E1, K1 and RH1. Why we are using that E1, K1, RH1? Because in internal resistance, in formula of internal resistance, that is E minus V by V into R. Okay, so
the E is EMF of that primary cell. So, we are using here E, and we connect a resistance box across that. This is positive terminal and this is the negative terminal. So, the current will flow in this way, and there is a battery, sorry, there is a key, we call that K2, this is K1 and K2, and a galvanometer and jockey is connected in this way to complete the secondary circuit. This is the secondary circuit. This is secondary circuit. So, this is the circuit diagram to find out the internal resistance of a primary cell. This is a practical application which you have to perform in CBSE examination or RBSE examination. It is compulsory for all. There is no option for this practical. Okay. So, again mention in the points. First of all, we will write for the primary circuit, then we will write for the secondary circuit, then we will find out the potential gradient, and then finally we will get the value of internal resistance of primary cell. So, write down the first point: battery E1, key K1 and rheostat RH1. Battery E1, key K1, rheostat RH1 are connected in series with a potentiometer wire AB to complete the primary circuit. Next, in the second point, for the secondary circuit, positive terminal of primary cell connected with capital A and of potentiometer, negative terminal connected with galvanometer, and jockey, a resistance box and a key K2 connected across the cell E. Positive terminal of cell connected with the end A of potentiometer wire, negative terminal connected with the galvanometer, jockey, and a resistance box and key K2 is connected across the cell E to complete the secondary circuit. Fine. Yes. Now, in the next point, when K2 is open, जब आप K2 को ओपन रखेंगे, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स आपने यहाँ कनेक्ट किया है ये सर्किट में इन्वॉल्व नहीं होगा. It means when K2 is open, the potential difference of this cell will be equals to its EMF when you are not using resistance box across that. In that condition, potential difference of cell will be equals to EMF of cell. And when we close the key K2, then resistance will be applied across that, and in that condition that potential difference will be terminal potential difference for the cell E. In that equation, E is EMF, V is terminal potential difference, and capital R is resistance across which we have to find out the potential difference whatever. Yes. तो चलें स्टार्ट करें. तो हमने इसकी तो वर्किंग तो कंस्ट्रक्शन के लिए बात किया. थर्ड आप क्या यूज़ करेंगे? थर्ड पॉइंट, व्हेन की K2 is open, when key K2 is open means we are not using this circuit, and then we can balance the EMF of cell with the proportional length of the potentiometer wire.
तो जितनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ से क्या होगा, बैलेंस होगा। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, इट विल शो द जीरो डिफ्लेक्शन, क्या शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन। तो राइट डाउन दैट व्हेन की K2 इज ओपन and balancing length for EMF of cell, balancing length for EMF of cell is EMF of cell is L1, sorry ना, E के लिए कितना बैलेंसिंग लेंथ, L1, बैलेंसिंग लेंथ फॉर EMF of cell is L1. If the balancing length is L1, then E will be proportional to what, L1 according to potentiometer principle, and E will be equals to what, it will be equals to XL1. So you can write that E is XL1, and in that case X will be equals to E by L1, where X is known as potential gradient. This is known as potential gradient. And what is potential gradient? If we find out the potential gradient, it is potential per unit length, and determination of potential gradient is known as standardization of a potentiometer. तो सबसे पहला काम ही हमारा क्या होता है, standardization find out करने के लिए, means we have to find out the potential gradient, and the value of potential gradient determine the standardization of any potentiometer. So you can write that determination of potential difference, determination of potential difference is known as standardization of potentiometer. Determination of potential gradient is known as standardization of potentiometer. Fine. So this is equation number first and fourth. Next, if we close the key K2, then the resistance box will be involved in the circuit, and we remove the key from the resistance box, 1 ohm, 2 ohm, whatever. If you remove the resistance key from the resistance box, now the potential difference will be known as terminal potential difference. So in the next point, now key K2 is closed, now key K2 is closed, now key K2 is closed, and capital R ohm resistance is removed, capital R ohm resistance is removed from resistance box, and balancing length for the terminal potential difference, of cell, balancing length for the terminal potential difference of cell is L2. If length is L2, then terminal potential difference is V. So according to principle of potentiometer, we can write that V will be equals to XL2, and you can put it equation number second. First was E equals to XL1, this is the second one, V equals to XL2, this is equation number second. And in the next point, we know the value of internal resistance, formula for the internal resistance of cell, that is R equals to E minus V by V into R. Put it equation number third. So we can put the value of E and V in this equation. So you can write that from first, second and third. That is R equals to value of E is XL1
value of V is XL2 and the value of V again XL2, it is multiplied with the R, x cancelled out, so the R will be equals to L1 minus L2 upon L2 into capital R. That is the formula for the internal resistance which we can determine with the help of potentiometer. L1 L2 का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है. फर्स्ट आपको क्या करना है, K2 को ओपन, और इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंसिंग लेंथ निकालना है, दैट विल बी L1. पूरे प्रैक्टिकल में L1 एक ही बार निकालना है, दोबारा नहीं निकालना है. क्लियर है. L2 कैसे निकालेंगे, यू जस्ट पुट द की K2 हियर एंड रिमूव द रेजिस्टेंसेस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स. सपोज फर्स्ट वैल्यू के लिए यानी कि फर्स्ट रीडिंग के लिए आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना वैल्यू फाइंड आउट किया, 1 ओम. आप 1 ओम के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे तो L2 होगा वो आपके लिए. यहाँ आपके लिए L1 तो आपने एक बार निकाल लिया, 1 ओम के लिए L2 आप यहाँ पुट करेंगे, वही L2 यहाँ पुट करेंगे और R की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 ओम. दैट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर 1 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स, 1 ओम value of resistance box. Then you can find out the value 2 ohm, 3 ohm, whatever. Then you find out the balancing length for 2 ohm, put the value of L2 here, L1 is same, we have to find out once and in the practical, and put R equals to 2 ohm here, so you will get the 5 or 6 whatever. और इस वाली प्रैक्टिकल की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि जितनी भी फिज़िक्स में हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है, फाइनल वैल्यू निकालने के लिए जितनी भी ये आपको गिवन होता है, जितनी भी आपको रीडिंग्स आपने निकाली हैं, जितनी भी रीडिंग्स आप निकालते हैं उन सब रीडिंग्स को आप क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं. पर इस केस में आपको एवरेज नहीं निकालना होता है, आपको क्या करना है, आपको मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू पर आपको लिखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू. थैंक यू.